Hello students, how are you? I hope all are fine. So this video we are going to discussing motion in plane, horizontal projectile motion. So previous videos are we are discussed oblique projectile motion, so all things. And next this video horizontal projectile motion, what is the equation of trajectory equation, how do we derive time of flight, and how do we derive third one range. So shall we start? See here, first horizontal projectile motion. For example, one top of tower is there. This tower to one particle is thrown horizontally. So velocity is u. After t seconds, velocity ux and vertically uy. The resultant angle is theta, velocity v. Okay. So it is reached the ground. For example, any tower is there. So tower 2 you thrown one stone. So it will reach the ground. So we are going to derive here. First thing is equation of trajectory. Second one time of flight. And third one range. So first horizontal projectile motion definition. If a body is projected horizontally from some height above ground, then it will follow parabolic path. This is the parabolic path and will strike ground at some point. So strike ground at some point. This motion is called horizontal projectile motion. I hope understood this definition. Next we are going to deriving equation of trajectory. Equation of trajectory. First, horizontal displacement. See, this is the x-axis and this is the y-axis. So this height is tower height h, velocity u, and after t seconds vx, vy and v. Okay, and this is the total range. Horizontal range is r. So time of flight means time of flight here, time of ascent plus time of descent. But time of ascent, no time of ascent, only time of descent there in this horizontal projectile motion. Equation of trajectory, horizontal displacement क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर देखिए यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन. सो काइनेमेटिक इक्वेशन पता है, हम प्रीवियस वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं. तीन इक्वेशन होंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एस. यहाँ पे यूज करेंगे एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. आई होप अंडरस्टूड दिस इक्वेशन. सो एस एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, एक्स हो जाएगा. यू एक्स इज इक्वल्स टू यू इनिशियल वेलोसिटी, ये u इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इज इक्वल्स टू 0, ये u एंड uy इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. सो u एंड ax इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू t सेकेंड्स. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशंस वेरिएबल्स, यहाँ पे वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम मिलता है x इज इक्वल्स टू u इंटू टी. सो यहाँ से एक इक्वेशन मिलता है t इक्वल टू x बाई u. So this is first equation. So this is the horizontal displacement relation. Next vertical displacement. I hope all are following. So vertical displacement sy equal to uyt plus half ayt square. बच्चे यहाँ पर uy क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली at the highest point no velocity means 0. Horizontal velocity is there, without horizontal velocity it will be not reach ground. So that's why here uy is equals to 0 and sy equal to y and ay is equals to, तो ये माइनस g हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर sy इक्वल टू y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, हाइट, तो हाइट किधर, नेगेटिव हाइट, माइनस h हो जाएगा. ओके,
आई होप अंडरस्टूड दिस वन। तो यहाँ पर हम ये एच नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट अगर लिखना है डायरेक्ट एस वाई इक्वल टू वाई, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन फाइंड करना। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट रिलेशन लिखेंगे तो जब हम हाइट रिलेशन लिख देंगे, तो यहाँ पर सिर्फ हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी रिलेशन लिखते हैं। तो व्हाट इज द इक्वेशन? सो फाइनली वाई इक्वल टू यू वाई 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। So I hope understood this one. This is the second equation. Clear? First and second equation clear. So next step I am writing here. So if you want this one, copy. Yeah. Equation of trajectory. चला गया बीच क्वेश्चन. So from 1 and 2 we get trajectory equation y equal to half gt square. So y equal to half into g into t value x by u whole square. So answer finally trajectory equation half into g into x square by u square. Clear? Our output is got y is equals to half g into u square by x square by u square. ये होता है ट्रैजेक्टरी इक्वेशन. नेक्स्ट, सो टाइम ऑफ फ्लाइट. अभी टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे डिराइव करना चेक कर देंगे. टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, the time taken by horizontal projectile motion, horizontal projectile motion to reach the ground is called time of flight. तो the time taken by horizontal projectile motion to reach the ground is called time of flight. तो ये होता है यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरा है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो ऑल आर वर्टिकल, ए वाई एस वाई ए वाई. तो यहाँ पर एस वाई इक्वल टू height is decreasing, so time of flight relation height is decreasing, so minus h, and acceleration ay equal to minus g, and uy equal to uy value 0, so t is equals to t seconds. I hope understood this step. Next, substituting these values, minus h equal to half into minus g into t square. So minus minus get cancel. So h equal to half into gt square. So this is the time of flight. So time of flight final equation. So here t equal to 2h by g root over. So this is the time of flight. T is equals to root over 2h by g. So in time of flight, oblique projectile motion 2u sin theta by g. But here we are getting in horizontal projectile motion root over 2h by g. I hope understood this equation also. Next, horizontal range. Means this is the horizontal range. Horizontal range. So r equal to, so equation
x is equals to ux plus uxt plus half axt square. So sx is equals to total horizontal range r, ux is equals to u, and time of flight t is equals to total time of flight 2 root over 2h by g. So next ax is equals to horizontal acceleration. Horizontal acceleration in oblique horizontal projectile motion 0, but inclined projectile motion we get some we have some value. Okay, that time we will discuss inclined projectile relation. So here finally sx is equals to r equal to ux means u into t. So r equal to u into root over 2h by g. So we got formula in horizontal projectile motion range, horizontal range equal to u into root over 2h by g. These formulas are very important. We are using in numerical related. So next we will discuss numerical something else. Okay. I hope understood horizontal projectile motion, equation of trajectory and time of flight and range. Thank you very much. All the best.